हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स पीपी सोनी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। नेक्स्ट, अभी हमने टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, एप्लीकेशंस ऑफ जंक्शन डिवाइसेस या जंक्शन डिवाइसेस के डायोड्स को हम कितने टाइप से यूज़ कर सकते हैं। उसमें हमने जीनो डायोड पहले पढ़ा था और दूसरा है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स बेसिकली हम यहाँ पे ऑप्टो मीन्स लाइट, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रिलेटेड। सो यहाँ पे लाइट को यूज़ करके डायोड को कोई लाइट का फंक्शन वहाँ पे डायोड के साथ कनेक्ट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए। तो वो डायोड जो बनते हैं जो लाइट पर बेस्ड वर्क करते हैं उनको हम ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डायोड्स बोलेंगे। सो अभी तक हमने सो फार वी हैव डिस्कस्ड हाउ सेमीकंडक्टर डायोड बिहेव्स अंडर electrical inputs. In this section, we will discuss those semiconductors in which current carriers are generated by photons or generate photons in a process called photo excitation. तो इस टॉपिक में तीन टाइप की डिवाइसेस हमारे पास मेनली तीन टाइप की डिवाइसेस हमें स्टडी करनी है। डिवाइसेस बहुत सारी हैं, हम तीन टाइप की डिवाइसेस यहाँ पर स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज़ फोटो डायोड। फोटो डायोड In semiconductors, current carriers are produced when energy is supplied to release electrons from valence band. In photodiodes, this energy is supplied in the form of light energy. A junction diode made from photosensitive material, in this case, it is in photodiode one region is made very thin so that incident light can go through it to the revelation region. So main point is कि ये है कि first one that we have to use light energy, that is photons as input instead of electrical energy, and a photosensitive material is used to make this diode photosensitive semiconductor material. Used to make this kind of diode. Second point, one या top layer of this diode is made very thin so that the light can penetrate into the depletion region. A photodiode is operated under reverse bias condition. Reverse bias condition when the photodiode is illuminated with energy greater than the energy gap of the semiconductor, the electron hole pairs are generated. The construction of photodiode is such that the electron pairs are generated in or near the depletion region of the diode. Inside the diode, electric field is such that electrons go to n side and holes go to the p side, vice versa, giving rise to an EMF. When an external resistance is connected, this current flows through it. Then current flows through it due to that voltage created. This current is called photocurrent and it is proportional to the light intensity falling. So we can say here the light energy is used to create electron hole pairs near the depletion region
Hence, there is a potential difference produced which causes a photocurrent that is reverse current in the context of diode to flow in the circuit when connected in a closed circuit to a resistance. This photocurrent is directly dependent on the intensity of light falling. Meaning more is the intensity of light, more will be the reverse current. इसके साथ में the circuit symbol of this diode is like this. And the circuit will be made like this. This p type will be connected to the negative terminal so that the diode can be in reverse biased condition along with the load resistance. Okay, this is the circuit. Now the VI characteristic of this graph will be in reverse region because it is used in reverse bias condition. रिवर्स करंट इज इन माइक्रो एम्पियर, वेरी स्मॉल. तो ग्राफ रिवर्स करंट के साइड में फोटो डायोड का इस टाइप का बनेगा फॉर अ गिवन इंटेंसिटी. इफ इंटेंसिटी इज हायर द सैचुरेटेड रिवर्स करंट विल ऑल्सो बी हायर. So suppose this is for intensity I1, this is for intensity I2, this is for intensity I3. Hence I3 is greatest and I1 is smallest. Okay, let's try a question on this. A PN photodiode is made of a material with band gap of 2 electron volts. Full stop. What is the minimum frequency of radiation? Radiation that can be absorbed by the material. Okay, so minimum energy should be equal to the energy gap of the diode. एनर्जी गैप से ज़्यादा एनर्जी आनी चाहिए तभी ये फोटो डायोड वर्क करेगा. सो मिनिमम फ्रिक्वेंसी यहाँ पे एनर्जी गैप के इक्वल होनी चाहिए. और फॉर्मूला है एनर्जी फोटोन की एनर्जी का HF. यहाँ से F इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है तो 1.6 10⁻⁹ का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय H. ओके, यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा वो हमारा हर्ट्ज में आंसर है. नेक्स्ट सेकंड टाइप ऑफ optoelectronic devices an LED, that is light emitting diode. Okay, first point, when a junction is forward biased,
the energy is released at the junction due to the recombination of electrons and holes in the depletion region. For silicon and germanium, this energy is quite low because of their low energy band gap and it is in infrared region. So to get this photon energy in visible region, we have to use semiconductors with greater energy band gap, like gallium arsenide, which has 1.4 electron volt energy gap, that gives us photons in visible region. And then for different colors of light, different type of materials are used depending on the energy gap band required. Light emitting diode is very heavily doped so that there are more number of electron hole recombination occurring near the junction, and hence more light is emitting from the diode. And it is covered with a transparent material so that the light can come out. Okay, as the forward current increases, intensity of light increases. It is used in forward bias, I think I told. Yeah, it is used in forward bias condition. As the forward current increases, the intensity of emitted light also increases, but up to a maximum limit. After then it does not increase. As the forward current intensity of light increases and reaches a maximum value, further increase in forward current result in decrease of light intensity. उस लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज करने पर लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी. एंड LEDs आर बाइज्ड सच दैट लाइट एमिटिंग एफिशिएंसी इज मैक्सिमम, बिकॉज वही हमारी इससे रिक्वायरमेंट है. Okay, the VI characteristic of LED is similar to that of silicon junction diode, but the threshold voltage are much higher and slightly differ to each color. The reverse voltage, breakdown voltage of LED are very low, approximately around 5 volt. So high reverse voltage should not appear across them. They will damage the diode. LEDs are used in remote controls, burglar alarms, communication devices, etc.
and advantages are low voltage and power consumption, low noise, fast action or on off time, and no warm up time, and nearly monochromatic light. Monochromatic means single frequency light, and long life, etc. Okay, circuit symbol of this type of diode is just the reverse of photodiode. फोटोडायोड में लाइट यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से लाइट प्रोड्यूस हो रही है. सो द सर्किट सिंबल इज जस्ट अपोजिट. लाइट इज गोइंग out from the diode, not coming in. Okay, practically it look like this. Okay, the general IV characteristic of LED is, as I said, similar to the conventional diode, apart from the fact that the knee voltage is much higher and reverse voltage, breakdown voltage is much smaller. So it will look like kind of this, and it is slightly different for different colors. Infrared, red, amber, yellow, green, blue, white, etc. So different color के लिए थोड़ा सा slightly variation रहता है, बाकी is much similar. Shape is similar. This is forward voltage, this is forward current. That is in milliampere. It is in volts. Okay, so this is all about light emitting diode. Now third type of optoelectron device that we have to talk about in the syllabus is solar cell. Okay, solar cell also produces electricity using lights, but it is quite different from photodiode. photodiode में हम जो करंट प्रोड्यूस करते हैं वो रिवर्स करंट होती है, वो बहुत छोटी करंट होती है, उसको हम सेंसर्स की तरह यूज़ करते हैं. यहाँ पर सोलर सेल में फॉरवर्ड करंट निकलती ये आती है, यानी सोलर सेल में डायोड फॉरवर्ड वाइज में यूज़ होगा, और यहाँ पे फॉरवर्ड करंट हमें डायोड से मिलेगी, हमें करंट उसको सप्लाई नहीं करनी है. तो फोटो डायोड को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं रिवर्स बायस में लगाने के लिए. यहाँ पर सेल को बैटरी से कनेक्ट नहीं किया जाता, वो खुद ही हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है. सो अ जंक्शन डायोड इज इन विच वन इज पी टाइप एंड रीजन इज p type, one is p type, one is n type. The recombination between electron and holes is used to create light, and if you do the opposite work, we can use light to create electricity, just like in photodiode but in forward bias condition. So in this case, a junction diode made with the top layer very thin is used
in such a way that the photons of visible light uh, reaches to the depletion region and excite electrons from in the valence band so that they go from valence band to conduction band. Conduction band and producing electron hole pairs. These free electrons under the influence of barrier electric field move to the respective sites and a net potential difference develop across the junction. Similarly जैसे photodiode में होता है and now this potential difference is used to circuit में connect करने के बाद is used to create a net current. ओके नाउ डायग्राम. अभी यहाँ पे इस डायग्राम में हम फोटोडायोड का रियल व्यू बना रहे हैं इंस्टेड ऑफ इट्स सर्किट सिंबल. Okay, as you can see, the upper layer of this diode is very thin ताकि जो लाइट है वो डिप्लीशन रीजन तक रीच कर पाए और वहाँ से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर सके. एंड दिस इज द डिप्लीशन रीजन. Then this diode is connected to a load resistance where we will get the output. Okay, so this is the circuit, and lastly the VI characteristic of this type of semiconductor will be like this. The current is in forward side because ये forward bias में use हो रहा है. But the direction of current is in opposite direction because अब डायोड से करंट बाहर निकल रही है. So the graph will be in negative quadrant for the current due to the opposite direction of the current. So यहाँ पे एक पॉइंट होगा जहाँ पे करंट ज़ीरो हो जाएगी. ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं उसको. यानी जब करंट ज़ीरो है उस टाइम पे जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है दैट इज़ ओपन सर्किट वोल्टेज. And there will be a current when voltage is zero, that happens when circuit is short circuited. तो a short circuit current will, और short circuit में current maximum होती है तो this current will be maximum.
all the rest of currents will lie in between region. Okay, this is the characteristic of solar cell. Okay, a question on this. An LED has a voltage drop of 2 volt across it and passes a current of 10 microampere when it operates with a 6 volt battery. With a 6 volt battery with a limiting resistor of R. Then find the value of R. Okay, so for this formula is simple. I equals to V upon R. Now यहाँ पे V की जगह आएगा नेट वोल्टेज. LED में वोल्टेज ड्रॉप है 2 वोल्ट का और हमने बैटरी अप्लाई करी है 6 वोल्ट की. So the net voltage will be 6 minus 2 and resistance we have to find out. Current is 10 microampere, यानी वैल्यू आ जाएगी 4 upon 10 to the power minus 5. Hence R equals to 4 into 10 to the power 5 ohm. Answer. Okay, so these were all the topics of different kind of diodes. Now next topic is junction transistor. Junction ट्रांजिस्टर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजिस्टर एक डिवाइस है जो डायोड को सेमीकंडक्टर्स को यूज़ करके बनती है, जैसे डायोड बनता है. और ये काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में काफ़ी हेल्पफुल है उनको डेवलप करने में, जैसे कि आईसीज बनाने में, इंटीग्रेटेड सर्किट्स. फर्स्टली जो ट्रांजिस्टर बने थे वो कई टाइप के थे. उनमें कुछ ज़्यादा यूज़फुल थे, कुछ कम यूज़फुल थे. First type of transistor that was invented was point contact transistor. It was invented in 1947 by John Bardeen and W.H. Brittain in Bell Telephone Laboratories USA में, which is quite अभी भी वर्किंग लेबोरेटरी है, बहुत फेमस लेबोरेटरी है. जो सबसे फेमस टाइप का ट्रांजिस्टर है वो बाद में बना था, जिसको हम अभी तक यूज़ कर रहे हैं, और ये जो हम पढ़ेंगे वो भी उसी टाइप के ट्रांजिस्टर को पढ़ेंगे. दैट ट्रांजिस्टर इज़ नोन एज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. तो अपने सिलेबस में हम सिर्फ इसी ट्रांजिस्टर को पढ़ने वाले हैं. शॉर्ट में इसको बोलते हैं BJT. इट वाज डिज़ाइंड और इन्वेंटेड बाय विलियम शॉकले इन 1951. ओके, तो अभी मैं जहाँ पे भी ट्रांजिस्टर बोलूँगा उसका मतलब ये है कि हम BJT की बात कर रहे हैं. ओके, पहले स्ट्रक्चर उसका क्या होता है, कैसे वर्क करता है वो देख लेते हैं. सो ट्रांजिस्टर या BJT, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, is a 3-terminal semiconductor device in which a p-type or n-type semiconductor conductor is fabricated between two n-types or two p-types layer. On this basis, there can be two type of junction transistor.
first one is PNP junction transistor, in this an n-type thin layer is sandwiched between two p-type semiconductor layer. टू पी टाइप लेयर। ओके, और यहाँ पे चलो मैं बाकी सब इसका डायग्राम में समझा देता हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर, दिस इज़ सेकेंड एंड लास्ट इज़ थर्ड। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं एमिटर बिकॉज इट एमिट्स चार्ज कैरियर्स। सेकेंड पार्ट जो सबसे थिन पार्ट है इट इज़ कॉल्ड बेस, एंड थर्ड पार्ट कलेक्ट्स द चार्ज कैरियर्स, हेंस इट इज़ कॉल्ड कलेक्टर। और पीएनपी में ये पी टाइप का होगा, बेस एन टाइप का होगा, कलेक्टर पी टाइप का होगा, एंड ऑल विल बी कनेक्टेड टू इन द सर्किट थ्रू टर्मिनल्स। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, इसका सर्किट सिंबल इज लाइक दिस। Okay, in this line represent emitter, this base and this is collector. And PNP में P टाइप में होल्स होते हैं, तो होल्स यहाँ पे एमिटर से बेस की तरफ जाएंगे। तो होल्स जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं उसी डायरेक्शन में करंट होती है बिकॉज होल्स आर पॉजिटिव, हैंस द करंट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम एमिटर टू बेस डायरेक्शन। तो PNP के सर्किट सिंबल में एक हमें करंट शो करनी पड़ेगी विच इज़ गोइंग फ्रॉम एमिटर टू बेस। दिस इज़ PNP ट्रांजिस्टर सर्किट सिंबल। ओके, यहाँ पे थिनेस्ट लेयर को बेस बोलते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं। अगर एग्ज़ाम में आता है तो हमें ये सारा वर्ड्स में भी लिखना है। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर इज़ NPN ट्रांजिस्टर। In this, obviously, a thin layer is sandwiched between a thin p-type layer, between two thick n-type layers, n-type layers. ओके, तो बाकी सब कुछ सेम है, बस P की जगह N हो जाएगा और N की जगह P हो जाएगा और करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। So this is emitter, this is base and collector, and these are N type and this is P type, and circuit symbol will also be same apart from the direction of current. Emitter, collector and base, and the direction of current now will be towards the emitter, क्योंकि अब एन टाइप में यहाँ पे एमिटर जो है वो एन टाइप है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स बेस की तरफ जाएंगे तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी, यानी करंट की डायरेक्शन अब बेस से एमिटर की तरफ होगी, हैंस दिस डायरेक्शन। ये हो गया NPN। अब यहाँ पे ये एमिटर बेस कलेक्टर होते क्या हैं, उन दोनों को मैं एक साथ यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर अलग से हमें सिर्फ PNP पूछा जाता तो ये चीज़ एमिटर बेस कलेक्टर वाली हमें उसके साथ ही मेंशन करनी होगी। सो फर्स्ट was emitter. First region in transistor was emitter. Emitter is heavily doped region, that means contains larger impurity atoms. heavily doped, जहाँ चार्ज के रेट ज़्यादा होते हैं। अगर N टाइप है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, P टाइप है तो होल ज़्यादा होंगे, एंड इट सप्लाइज the charge carriers in the circuit, specifically into the base, and its
thickness is medium. Okay, ये हो गया emitter. Now second one was base. Base is the thinnest part. It is very lightly doped and the thinnest in all three regions. Thinnest. And most of the charge carriers just pass through it. From emitter to collector. So this basically works as a transition region between the emitter and collector. So third one is collector. Okay, so finally the basic idea between emitter base collector is emitter emit करता है चार्ज कैरियर्स को, बेस से वो पास करते हैं, कलेक्टर वो रीच करते हैं. एमिटर सबसे ज़्यादा डोप्ड होता है, बेस सबसे कम डोप होता है और कलेक्टर इन बिटवीन मीडियोक्रिली डोप्ड होता है. और थिकनेस कलेक्टर की सबसे हाईएस्ट होती है, बेस की सबसे कम होती है, एमिटर की इज़ इन बिटवीन. द डोपिंग लेवल of collector is slightly lesser than emitter and thickness is highest and it collects the charge carriers coming from the emitter. Okay, each type of transistor two kind of junction. यहाँ पे दो टाइप के जंक्शन होंगे ट्रांजिस्टर में. You can see clearly. एक emitter base junction होता है. Emitter base junction is here. And second one is base collector junction. And depending on कि हम किस टाइप का ट्रांजिस्टर बनाना चाहते हैं, हम इन दोनों को उसके हिसाब से बाइजिंग देते हैं. अगर एक्टिव ट्रांजिस्टर बनाना है तो उस केस में ये एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड होता है, बेस कलेक्टर रिवर्स होता है. एक्टिव type transistor emitter base junction is forward biased and base collector junction is reverse.